हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन फ्रॉम आवर स्पेसिमेन पेपर। हमें देखते हैं क्या क्या निकालनी है चीजें। सबसे पहले तो हमें क्या क्या करना है। हमें सबसे पहले निकालना है क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ फ्रॉस्ट कंपनी। एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस निकालना है यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कैपिटल गियरिंग विच इज डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, ये हमें निकालना है। इक्विटी गियरिंग इज डेट अपॉन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग इज डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी यूजिंग मार्केट वैल्यूज, मतलब मार्केट वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड लास्ट में मार्केट वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन बाद में ये दोनों क्वेश्चन तो थ्योरी है, तो बाद में फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट आई गेस विद कंपनी। तो हाँ, ये रहा फर्स्ट कंपनी। तो क्या निकालना था? एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चन नंबर ए के लिए एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस बोलो, फिर मार्केट प्राइस बोलो। मैंने यहाँ पे क्या बोला है? शेयर प्राइस बोला है। तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला के ई इज इक्वल टू डी ओ ब्रैकेट ओपन 1 प्लस जी, हाँ, पी ओ प्लस जी। कितने मार्क्स के लिए पूछा है ये वाला क्वेश्चन? 3 मार्क्स के लिए, मतलब छोटा सा ही होगा। Let's start. Frost Company has dividend payout ratio of 40% and has maintained this payout ratio for several years. The current dividend per share DPS is 0.5 per share, and it expects that its next dividend per share payable in 1 year's time will be 0.52 per share. Working notes. पहली बात, historic ग्रोथ लिख देता हूँ, ग्रोथ लिख देता हूँ ऐसे। In order to find out our growth, we need to use the historic growth model. G is equal to current year dividend upon dividend n number of years ago, bracket close, raised to 1 by n minus 1. मैं n is 1 क्योंकि उन्होंने पिछले साल का ही दिया है। करंट ईयर डिविडेंड पे आउट रेशियो, हाँ, और नेक्स्ट ईयर का, हाँ, तो डिविडेंड एन नंबर ऑफ ईयर को व्हिच इज 0.5 एंड डिविडेंड एन नंबर ऑफ ईयर्स को, सॉरी, दिस इज 0.5, ऊपर इज 0.52। मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी उन्होंने दी होनी चाहिए फिलहाल तो। ये देखो, कॉस्ट हैज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 12.4%। P is equal to current dividend upon this dividend n number of years ago, which is, so therefore G is equal to 4%.
पीओ इज 0.5। ओके, अब जरा रुक जाओ। आंसर तो मुझे करेक्ट ही आएगा। दैट इज ठीक है, वो तो ठीक है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं डी करंट ईयर का ऐड करके नेक्स्ट ईयर पे ग्रोथ ऐड करूँ, तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। तो पीओ वुड बी, पहली बात तो पी मल्टीप्लाइड बाय 1 + जी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन 0.5 - 4%। तो मुझे जो आंसर आता है पीओ का 6.19। अगर एक्सेल ने ठीक से कैश किया रहेगा तो मुझे लगता है 6.19 पर शेयर आंसर होना चाहिए। कर लेते हैं। देखो 6.19 आया था, इन्होंने 619 सेंट्स लिखा है, विच इज $6.19। तो जो हमें मिला है, तो दिस इज करेक्ट। फॉर्मूला उन्होंने अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है, बट ठीक है। आई थिंक वट एवर वी हैव यूज्ड वुड आल्सो बी कंसिडर्ड। कि हमने बेसिकली D1 नहीं लिया है, हमने D0 लिया है। ठीक है, ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी। कैपिटल गियरिंग डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी यूजिंग मार्केट वैल्यूज। हाँ, अब ये चैलेंज है क्योंकि हमारे पास, देखो हमारे पास पीओ इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव फाउंड द एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस टू बी $6.19। डॉलर्स में नहीं लिखा ना। पीओ इज इक्वल टू, अनलेस 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 हम यही यूज करेंगे, अनलेस इन्होंने हमें नीचे कुछ और दिया होगा तो। पढ़ लेते हैं। बॉन्ड ए, अच्छा अभी ये बॉन्ड्स के बारे में दिया है। बॉन्ड्स के भी दो बॉन्ड्स है, ठीक है। तो बॉन्ड ए विल बी रिडीम्ड एट अ नॉमिनल वैल्यू in 10 years time and pays annual interest of 9%. Cost of debt of the bond is 9.83% AD. The current ex market price of bond is 95.08. Bond B will be redeemed at nominal value 4 years time and pays an annual interest of 8%. The cost of debt of bond B is 7.82%. The current ex dividend market price of bond is 102.1। सबकी नॉमिनल वैल्यू 100 ही है। हाँ, ऊपर दिया है 100 ही है। मुझे फाइंड आउट करना है डेट अपॉन गियरिंग ना। क्या कैपिटल गियरिंग फाइंड आउट करना है सबसे पहले। वन जीरो टू पॉइंट जीरो वन, 102.01। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए अब मेरे को। माय नंबर ऑफ शेयर्स वुड बी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू वैल्यू
अपॉन नॉमिनल वैल्यू ट्वेंटी डिवाइड बाय 100 10 डिवाइड बाय 100 वैल्यू ऑफ टोटल डेट, फिर वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी भी मिल जाएगी एक्चुअली, अगर मैं बस इसको नंबर ऑफ शेयर ढूंढने पड़ेंगे क्या? नहीं, मार्केट वैल्यू 1 है, चलो बढ़िया। 25 इंटू, ये मेरी होगी वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट प्लस डेट, हाँ ठीक है। कैपिटल गियरिंग के लिए, कैपिटल गियरिंग के लिए, हाँ पहली बात तो क्या मुझे इसमें से टैक्स माइनस करना चाहिए डेट में से? नहीं, लेट्स गो अहेड एंड नॉट डू टैक्स डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट अपॉन ब्रैकेट ओपन, डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, मुझे मिला 15.88% एज माई कैपिटल गियरिंग। They have got 15.9, हाँ मतलब they have rounded up to one decimal which is also okay। और लास्ट में अब हमें ढूंढना है वैक। या टोल्ड अस कि हमें लास्ट में वैक ढूंढना है, और वैक हमारे पास ऑलरेडी हमारी मार्केट वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू भी है, ऊपर सब एक्चुअली एडजस्टमेंट्स किए हुए हैं, सो वैसे तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज, जस्ट बिकॉज मेरी आदत बन चुकी है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करने की, मैं पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा। वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, देखो इट विल नॉट टेक मच टाइम बट see it might take a few moments, sorry it might take a few moments, but then आंसर करेक्ट आएगा इसकी गारंटी रहती है। तो मार्केट वैल्यू, पोस्ट मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ डेट, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख देता हूँ, पोस्ट कॉस्ट, नॉमिनल वैल्यू में डिवाइड करूंगा, चाहे जो मर्जी आ जाए। इक्विटी, देन बॉन्ड ए बी के साथ मैं लिख दिया यहाँ पे। नॉमिनल वैल्यू मुझे पता है इसकी 100 है, इसकी भी 100 है, और इसकी 1 है शेयर की, तो इन दोनों की भी वैल्यू 25 मिलियन, 20 एंड 10,
मार्केट वैल्यू जो मुझे इन्होंने दी थी वो मार्केट वैल्यू, हाँ, पर मैंने लिखी भी थी ये वाली, दोनों की ये रही मार्केट वैल्यू। इसकी मुझे मिली थी 6.19। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको दिया था यहाँ पे 12.4% दिया था। और यहाँ पे फॉर बॉन्ड वन कितना दिया था, एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 6%, सॉरी 9%। कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ दिस बॉन्ड इज 9.83%। और आखिरी में द करंट एक्स मार्केट प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इज 9 ठीक है। और ये एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेट इज 7.82। तो आ गया 11.88%, जो कि इनको मिला रहेगा 11.9%। दे आर जस्ट राउंडेड अप टू 1 डेसिमल। कितना ही टाइम लगा, 2 मिनट भी नहीं लगे शायद इसके लिए तो। लास्ट आता है थियोरी। कैन नॉट इग्नोर द थियोरी। थियोरी थियोरी, हाँ। ये तो कितने मार्क्स के लिए हो गया, ये 7 मार्क्स के लिए हो गया। तो 13 मार्क का तो थियोरी है। डिस्कस वेदर a change in dividend policy will affect share price forecast. Sorry, share price of Frost company. Yeah, if dividend is not given, then the share price would increase. Or rather, actually, if dividend is not given, then a lot of shareholders might not be happy or might be disappointed, which could lead to selling a wide number of shares, selling of shares at a large. उसके बाद एक काम करते हैं, इनका ना पैराग्राफ पढ़ते हैं। मुझे लगता है इनके पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें होती है, हम वो इग्नोर कर देते हैं। As Frost company has maintained a dividend payout ratio for several years, the company deciding not to give dividend payout ratio or giving not to give dividend would lead to a large number of shareholders unhappy। and वो वाला पॉइंट फिर से मैं एक बार चिपका देंगे। नहीं, हाँ, बाकी सब तो ऊपर पर से दिया है। पहले तो शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, बट देन ड्यू टू वार सेलिंग वो शेयर प्राइसेस नीचे आएंगे। और क्या हो सकता है इसका। लेट्स स्टडी। Actually, change in dividend policy, because of change in dividend policy, uh, the KE could increase. Cost of equity could increase because because dividends are a form of return for the equity shareholders, and by them not getting the return, the risk could increase. तो पढ़ लेते हैं आंसर इनका, बहुत अच्छे तरीके से लोग बताते हैं। Miller and Modigliani showed that in the perfect capital market, the value of company depended on its investment decision alone and not on its dividend or financial decisions. In such a market, a change in dividend policy by Frost Company would not affect its share prices or its market capitalization. They showed that the value of a company was maximized if it invested in all the projects with a positive net present value. Its optimal investment schedule, the company could pay any level of dividend, and if it had insufficient finance, make up the shortfall by issuing new equity. Since investors had perfect information, they were indifferent between dividends. They were indifferent between dividends and capital gains. Shareholders who were unhappy with the level of dividend declared by the company could gain homemade dividend by selling some of the shares. This way, this was possible since there are no transaction costs in a perfect capital market. In a homemade dividend by selling some of the shares. It's not a homemade dividend, but it's some kind of gain.
Against this view are several arguments for a link between dividend policy and share prices. For example, it has been argued that investors prefer certain dividends now rather than uncertain capital gains in the future. The bird in hand argument. Basically, the bird in hand एक theory है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि अगर मेरे को जितना पैसा आज in form of dividend or interest मिल रहा है, it is okay rather than me gaining capital gains because future किसी ने देखा नहीं है, तो इसके वजह से अगर क्या बता अगर फ्यूचर में शेयर प्राइसेस गिर गए, so it is better to कि अभी के अभी dividends ले लो rather than anything, rather than having an uncertain capital gain in the future. It has also been argued that real world capital markets are not perfect, but semi-strong form efficient. Since perfect information is therefore not available, it is possible for information asymmetry to exist between shareholders and the managers of a company. Dividend announcements may give new information to shareholders, and as a result, in a semi-strong form efficient market, share prices may change. The size and direction of the share price change will depend on the difference between the dividend announcement and the expectations of shareholders. This is referred to as signaling properties of dividends. It has been found that shareholders are attracted to particular companies as a result of being satisfied by the dividend policies. It has been found that the shareholders are attracted to particular companies as a result of being satisfied by dividend policies. Okay, this is referred to as clientele effect. A company with an established dividend policy is therefore likely to have an established dividend clientele. The existence of this dividend clientele implies that the share price may change if there is a change in the dividend policy of the company, as shareholders sell their shares in order to reinvest in another company with a more satisfactory dividend policy. In a perfect capital market, the existence of dividends clientele is irrelevant. In a perfect capital market, the existence of dividend clienteles is irrelevant, since substituting one company for another will not incur any transaction cost. Since real world capital markets are not perfect, however, the existence of uh, dividend clienteles suggests that if Froste's company changes its dividend policy, its share price would get affected. This is all theory. We all have to read it. Basically यहाँ पे देखो पहले 4 मार्क्स दिए डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी के कि डिविडेंड नहीं देंगे तो भी चलेगा, ऐसा मिलर एंड मॉडिग्लानी ने बोला था. बट देयर वाज वन मोर थ्योरी ऑफ डिविडेंड रेलेवेंस. यहाँ पे बोलते हैं कि डिविडेंड इज इम्पोर्टेंट एज द बैकबोन ऑफ द कंपनी एज वेल, क्योंकि वरना शेयर होल्डर्स पैसे निकाल लेते हैं. बर्ड इन हैंड थ्योरी जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि इम्पोर्टेंट रहती है ये वो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Explain why Frost companies' capital instruments have different levels of risk and return. All capital instruments have different levels of risk and return. Oh, okay, I understand this. Basically, when it comes to equity shareholders, they face the highest risk, as in the creditor hierarchy theory. They are the last ones to get paid when liquidation takes place. However, when it comes to debt, when it comes to debentures, bond holders, or loan note holders, or whatever, these people come higher up in the hierarchy and in the place where unsecured creditors or secured creditors stands. And in when the time of liquidation comes or takes place, these people are the first ones who get paid. पढ़ लेते हैं एक बार. There is a trade-off between risk and return on Frost companies' capital instruments. Investors in riskier assets require higher return in compensation for this additional risk. In case of ordinary shares, investors rank behind all the sources of finance in the event of for liquidation, so are the most risky capital instruments to invest in. This is partly why Frost companies' cost of equity is more expensive
देन डेट फाइनेंसिंग। ये हम बोल सकते थे कि फ्रॉस्ट कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख लो और केडी देख लो। मुझे लगता है एग्जाम में जब स्लाइड हम चेंज करेंगे तो शायद ये पॉइंट याद आ सकता है। सिमिलरली फॉर डेट फाइनेंसिंग, हायर रिस्क बोरोवर्स must pay higher rates of interest on their borrowing to compensate lenders for the greater risk involved. Frost Company has two bonds, with bond A having higher interest rate and therefore higher risk. Since both bonds were issued at the same time, business risk is not a factor in the higher level of risk. Instead, this additional risk is likely to be due to the fact that bond A has a greater time until maturity, meaning that its cash flows are more uncertain than bond B. Particular, in particular, with interest rates are expected to increase in the future, longer term debt will have higher rate of interest to compensate investors for investing for a longer period. A further factor is that the total nominal value, that is the book value of bond A, is twice as large as bond B and therefore may be perceived to be riskier. बॉन्ड ए का कितना है अपना बुक वैल्यू 20 और ये अच्छा तो ये ज्यादा रिस्कियर होता है एडिशनल रिस्क ड्यू टू फैक्ट बॉन्ड ए हैज ग्रेटर टाइम अंटिल मेच्योरिटी। ओके राइट 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 बिकॉज ज्यादा टाइम में वो हमें पे कर रहा है, ही इज पेइंग यस विद इन 10 years, उसको हम लोग 4 साल में पे कर रहे हैं। एंड एज टाइम इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी ऑफ getting that amount increases and risk also increases. Overall, good sum, a nice sum, healthy sum.